Hello, dear students. Today we are going to read the fourth chapter from your ninth class Bihai book, that is A Truly Beautiful Mind. So let's begin the chapter. This chapter is about famous scientist Albert Einstein, who gave three groundbreaking discoveries about the motion of particles, electrodynamics, and the energy, and about energy. And he is also called a synonym of genius. So let's begin the chapter. Albert Einstein was born on 14 March 1879 in the German city of Ulm without any indication that he was destined for greatness. तो बच्चों वो 14 मार्च 1879 को ही वॉज बॉर्न इन जर्मन सिटी ऑफ उल्म, और बचपन से उनमें कोई ऐसी इंडिकेशंस नहीं थी कि ही इज़ गोइंग टू बी वेरी ग्रेट. ऑन द कॉन्ट्रेरी हिज मदर थॉट अल्बर्ट वॉज अ फ्रीक. टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज. उसके उल्टा ऐसा लगता था उनकी माँ को कि उनका बेटा जो है थोड़ा सा पागल जैसा है और उसका सर काफ़ी बड़ा है. एट द एज ऑफ 2.5, Einstein still wasn't talking. When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. तो 2.5 years की एज तक आइंस्टीन wasn't talking at all, और जब उन्होंने बोलना शुरू भी किया तो वो हर चीज़ को 2 times रिपीट करते थे. Einstein did not know what to do with other children and his playmates called him brother boring. आइंस्टीन को ये पता नहीं था कि अपने साथ के बच्चों के साथ वो कैसे खेले, कैसे मिक्सअप हों, और इसलिए उनके जो प्लेमेट्स थे उनको ब्रदर बोरिंग कहते थे. सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम. और इसलिए वो छोटे से बच्चा ज़्यादातर अपने आप में ही रहता था. He especially loved mechanical toys. Looking at his newborn sister, Maza, he is said to have, fine, but where are her wheels? वो ज़्यादातर मैकेनिकल टॉयज़ को से खेलना पसंद करते थे, और ऐसा कहा जाता है कि जब उन्होंने अपनी न्यू बॉर्न सिस्टर माजा को देखा तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा है, पर इसके व्हील्स कहाँ हैं. तो दिस वॉज द क्यूरियोसिटी ऑफ दैट स्मॉल चाइल्ड. A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession would not matter because he will never make a success at anything. Einstein began learning to play the violin at the age of 6 because his mother wanted him to. He later became a gifted amateur violinist, maintaining this skill throughout his life. जब वो छोटे थे तो उनके एक बार उनके हेडमास्टर ने उनके फादर से कहा था कि ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आइंस्टीन कौन सा प्रोफेशन चूज़ करते हैं, क्योंकि वो कुछ भी चूज़ करे उसमें वो सक्सेसफुल नहीं हो सकते. उनकी माँ ने उनको फोर्स किया कि वो वायलिन सीखे, और उन्होंने वायलिन बजाना सीखे, और पूरी लाइफ जो है एक एज अ हॉबी ही रिमेन अ वेरी गुड वायलिनिस्ट. But Albert Einstein was not a bad pupil. He went to high school in Munich, where Einstein's family had moved when he was 15 months old, and scored good marks in almost every subject. So you can see that whatever the opinion of headmaster was, but actually he was a good pupil, he was a good student, and he scored good marks in every subject. Einstein hated the school's regimentation and often clashed with his teachers. At the age of 15, Einstein felt so stifled there that he left the school for good. But Einstein को म्यूनिक स्कूल का स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन पसंद नहीं था, और अपने टीचर से भी उनका हमेशा आर्गुमेंट होता रहता था, जिसकी वजह से एट द एज ऑफ 15 आइंस्टीन ने वो स्कूल छोड़ दिया. The previous year, Albert's parents had moved to Milan and left their son with relatives. After prolonged discussions, Einstein got his wish to continue his education in German speaking Switzerland, in a city which was more liberal than Munich. Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics, and after finishing school, he decided to study at university in Zurich. But science wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with the walrus mustaches. When he reached to the university,
He was very interested in mathematics and physics, but there he developed some more interest. He also felt a special interest in a fellow student, Mileva Merrick, whom he found to be a clever creature. This young Serb had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. So he felt special interest in a fellow student, Mileva Merrick. She was from Serbia. Einstein saw in her an ally against the Philistines, those people in his family and at the university with whom he had constantly at odds. He found a good friend in her because she was also having the same interest like him. The couple fell in love. Letters survive in which they put their affection into words, and thus he found a good friend in Mileva Merrick. They fell in love और कुछ लेटर्स उनके एक्सचेंज होते हैं. लेट्स सी उन्होंने अपने लेटर्स में अपने टेंडर फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस किया है. Wrote Einstein, "How happy and proud I shall be when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion." So this is how they have expressed their love for each other. In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. He worked as a teaching assistant and gave private lessons. उसके बाद finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern. 1902 में वो as a technical expert he started working in a patent office. Dear students, पेटेंट ऑफिस ऐसा ऑफिस होता है जहाँ पे लोग अपने साइंटिस्ट अपने डिस्कवरीज को और इन्वेंशंस को रजिस्टर कराते हैं और वहाँ पे वो पेटेंट लेते हैं, उसका सोल राइट लेते हैं कि वो उनका खुद की ओन डिस्कवरीज हैं, उनके खुद के इन्वेंशंस हैं. तो इस ऑफिस में जब वो काम कर रहे थे उस समय काम करते समय वो खुद के भी इन्वेंशंस करते रहते थे और उसमें अपने रिसर्च में लगे रहते थे. Einstein was actually developing his own ideas in secret. He is said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics. तो वो अपने वहाँ पे जो वर्किंग डेस्क था उसको वो ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स कहते थे जोकिंगली. One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute. 1905 में उन्होंने अपना स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया जिसके अनुसार टाइम और डिस्टेंस जो है वो एब्सोल्यूट नहीं होते हैं. Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey, if one of them has been moving very fast relative to the other. From this followed the world's most famous formula which describes the relationship between mass and energy, that is equal to mc square. According to his special theory of relativity, उनका कहना था कि अगर दो एक जैसा समय बताने वाली घड़ियाँ किसी टाइम ट्रेवल पे जाएं और उसमें से एक जो है क्लॉक वो ज़्यादा स्पीडली मूव कर रही हो दूसरे क्लॉक की अपेक्षा, तो वापस लौटने के बाद दोनों क्लॉक एक जैसा सेम समय नहीं बताएंगे. दिस वॉज हिज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling. Unraveling means starting to fail. Albert had wanted to marry Mileva right after finishing his studies. Albert अपनी स्टडीज़ फिनिश करते ही मिलेवा मैरिक से शादी करना चाहते थे, but his mother was against it. She thought Mileva, who was 3 years older than her son, was too old for him. उनका मानना था कि मिलेवा उनसे जो 3 साल बड़ी थी वो काफ़ी ज़्यादा उम्र है उनकी. शी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड बाई मिलेवाज इंटेलिजेंस, और वो मिलेवा के इंटेलिजेंस से भी परेशान थी. शी इज़ बुक लाइक यू, हिज मदर सेड. आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ. उनका मानना था कि वो आइंस्टीन के लिए एक बुक से ज़्यादा कुछ भी नहीं है और इसलिए आइंस्टीन को अपनी वेडिंग जो है वो होल्ड पे डालनी पड़ी.
The pair finally married in January 1903 and had two sons. But a few years later, the marriage faltered. Faltered means became weak, and Mileva, meanwhile, was losing her intellectual ambition and becoming an unhappy housewife. After 2 years of constant fighting, the couple finally divorced in 1919. So you can see in 1903 they got married and they had sons, but 1919 में उनकी शादी जो है वो टूट गई. Einstein married his cousins Elsa the same year. Einstein's new personal chapter coincided with his rise to world fame. In 1915, he had published his general theory of relativity, which provided a new interpretation of gravity. 1915 में उन्होंने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी और इस तरीके से उनका फेम पूरे वर्ल्ड में छा गया. An eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate. और 1919 में सोलर इक्लिप्स हुआ जिस इक्लिप्स में साइंटिस्ट ने कैलकुलेशंस की एंड हिज जनरल एंड स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाज प्रूव्ड राइट. Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field. The newspapers proclaimed his work as a scientific revolution. और न्यूज़पेपर्स ने उनके इस वर्क को एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन का नाम दिया. Einstein received the Nobel Prize for Physics in 1921. In 1921, received Nobel Prize for Physics. एंड उसके बाद से उनको पूरी दुनिया से इन्विटेशंस एंड ऑनर्स मिलने लगे. When the Nazis came to power in Germany in 1933, Einstein immigrated to the United States. 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar. और न्यूक्लियर फिजन के डिस्कवरी के साथ ही अमेरिकन फिजिक्स जो है वो बहुत ही परेशान हो गए, अपसेट हो गए. Many of them had fled from fascism. और फासिज्म के कारण बहुत सारे तो जर्मनी छोड़ के चले गए, just as Einstein had. And now they were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb. और उनको डर था कि अब नाजीज जो है वो एटम बम बना के पूरे वर्ल्ड में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं. At the urging of a colleague, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on 2nd August 1939, in which he warned a single bomb of this type exploded in a port might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory. तो उनके किसी फ्रेंड ने उनको रिक्वेस्ट किया और इस रिक्वेस्ट को मानते हुए आइंस्टाइन ने उस समय के अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक लेटर लिखा और उसमें उन्होंने वार्निंग दी कि इस तरीके का अगर बॉम्ब एक्सप्लोड किया जाए किसी पोर्ट पे तो वो वहाँ के सिर्फ वो टेरिटरी नहीं, आसपास के सराउंडिंग एयर टेरिटरीज को भी डिस्ट्रॉय कर देगा. His words did not fail to have an effect. और उनके वर्ड्स का इफेक्ट हुआ, बट इट वॉज अफेक्टेड इन एन एडवर्स वे. The American developed the atomic bomb in a secret project of their own and dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945. तो उन्होंने अपना सीक्रेट एटम बम डेवलप किया एंड उसको हिरोशिमा और नागासाकी जो जापानी सिटीज़ थे उन पर ड्रॉप किया 1945 में. Einstein was deeply shaken by the extent of destruction. This time he wrote a public missive to the United Nations. इस घटना से आइंस्टाइन जो है वो अंदर तक हिल गए और जो है उन्होंने एक लेटर लिखा, ओपन लेटर लिखा. पब्लिक मिसिव मीन्स स्पेशली लॉन्ग ओपन लेटर. उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को लेटर लिखा एंड इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट. और उन्होंने एक प्रपोजल दिया वर्ल्ड गवर्नमेंट फॉर्म करने का. Unlike the letter to Roosevelt, this one made no impact. पर इस लेटर का कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ. But over the next decade, Einstein got ever more involved in politics. लेकिन इसके बाद से आइंस्टाइन जो है वो ज़्यादा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए एंड agitating for an end to the arms buildup and using his popularity to campaign
फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, और उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी को पूरे वर्ल्ड में पीस और डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने के लिए यूज़ करना शुरू किया. When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as scientific genius. तो आज भी उन्हें एक वर्ल्ड सिटीजन और साइंटिफिक जीनियस के रूप में याद किया जाता है. That is all from this easy learning with Kalpana, and I will bring some more videos for you.